नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखंडे अथ त्रयोदशोऽध्याय। व्यासुवाच। भो ब्रह्माण भगवन् पूर्वं श्रुतं मे ब्रह्मपुत्रः जलन्धरं महादैत्यं वधीच्छकर प्रभु तत्त्वं वद महाप्राज्ञ चरितं शशिमौलिना विस्तारपूर्वकं शृण्वन्कस्तृप्तये तद्ध्यक्षोमलं श्रुत्वाच इत्येवं व्याससम्पृष्टो ब्रह्मपुत्रो महामुनिः उवाचार्थवदव्यग्रं वाक्यं वाक्यविशारदा। सनत्कुमार उवाच। एकदा जीवशक्रो च भक्तया परमया मुने दर्शनं कुर्तिमीशस्य कैलासं जगं तु भृशम् अथ गुरुवृन्दयो ज्ञात्वा आगमनं शङ्करं प्रभु परीक्षितं तयोर्ज्ञानं स्वदर्शनरातात्मनो दिगम्बरोऽथ तन्मार्गमारुद्र च सदति सतां जटापदेन शिरसा अतिष्ठत् संशोभितानना। अथ तो गुरुशक्रो च कुर्वन्तो गमनं मुदा अलोक्य पुरुषं भीमं मार्गमध्यद्रुताकृतिं महातेजस्विनीं शान्तं जटासम्बद्धमस्तकं महाबाहुमहोरस्कं प्ररस्कं घोरं नयन् भीषणम्। अथो पुरन्दरो पृच्छत् स्वाधिकारेण दुर्मदा पुरुषं तं स्वमार्गान्तस्थितमज्ञाय शङ्करं। पुरन्दरोवाच। कस्तवं भो कुतायात किं नाम तत्त्वता स्वस्थाने संस्थिता शम्भु किं वान्यत्र गता प्रभु। सनत्कुमार उवाच। शक्रेणेतं स पृष्टस्तु किञ्चनोवाच तापसा शक्रपुनरपृच्छते नोवाच स दिगम्बरा पुनः पुरन्दरो पृच्छल् लोकानामधिपेक्षरा तूषणीमास महायोगी लीलारूपधरा प्रभु इत्थं पुनः पुनः पृष्टा शक्रेण स दिगम्बरा नुवाच किञ्चित् तग्वाञ्छ प्रज्ञानपरीक्षया अथ चुक्रोध देवे शस्त्रलोके शर्गर्विता उवाच वचनं चैवं निर्भर्तस्य जटाधरम्। इन्द्रवाच रे मया पृच्छमानोऽपि नोत्तरं दत्तवानसि सत्वां हनमि वज्रेण कस्तित्रातास्ति दुर्मते। सनत्कुमार उवाच। इत्युदीर्य ततो वज्री समीरीक्ष्य क्रुधाहितं हन्तु दिगम्बरं वज्रमुद्यतं स चकारः पुरन्दरं व्रजहस्तं दृष्ट्वा देव सदाशिवा चकारस्तम्भनं तस्य वज्रपातस्य शङ्करा। ततो रुद्र क्रुद्धाविष्टकरालाक्षो भयङ्करा दुद्रमेव प्रज्वाल तेजसा प्रदहन्वा बाहुप्रतिष्ठं बभुवा मन्युनानशचीपति संदहात भोगीव मन्त्ररुद्र पराक्रम दृष्ट्वा बृहस्पतिस्तूर्णं प्रज्वलन्तं स्वतेजसा पुरुषं तं धिया ज्ञात्वा प्रन्नाम हरं प्रभुं कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ततो गुरुरुदारधी नत्वा च दण्डवद्भूमो प्रभुं स्तोतुं प्रचक्रमे। गुरुरुवाच। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यम्बकाय कपर्दिने दीनानाथाय विभवे नमो धन्कनीशूदिने त्रिपुरघनाय शर्वाय ब्राह्मणे परमेष्ठिने विरूपाक्षाय रुद्राय बहुरूपाय शम्भवे विरूपायातिरूपाय रूपातीताय ते नमः। यज्ञविध्वंसकर्त्रे च यज्ञानाफलदायिने नमस्ते मखरूपाय परकरं परवर्तिने कालान्ताकाय कालाय कालभोगीधराय च नमस्ते परमेशाय सर्वत्र व्यापिने नमः।
नमो ब्रह्मा शिरोहन्त्रे ब्रह्मचन्द्रस्तुताय च ब्रह्मन्यायाय नमस्तेऽस्तु। नमस्ते परमात्मने त्वं गिरिनिलो व्योम त्वमेवापवसम्भुरा त्वं सूर्य क्षन्द्रमा भानि ज्योतिषङ्कं त्वमेव हि त्वमेव विष्णुस्त्वं ब्रह्मा तत्सत्तु सत्वं परेश्वरा मुन्यसन्ताध्यास्त्वं नारदस्त्वं तपोधना त्वमेव सर्वलोकेश सत्तमेव जगदात्मक सर्वार्णव्य सर्वभिन्सत्त्वमेव प्रकृते परा त्वं वै सृजसि लोकांश रजसा विधिनां भाक सत्त्वेन हरिरूपसत्त्वं सकलं यासि वै जगत् त्वमेवातसि महादेव तमसा हररूपधृकलीलया भुवनं सर्वं निखिलं पाञ्चभौतिकं त्वद्ध्यानबलता सूर्यस्तपते विश्वभावना अमृतं च वते लोके शशिवाति समीरन त्वचा न बलतो मेघा क्षाम्बुवर्षन्ति शङ्करा त्वचा न बलतः शक्र स्त्रीलोकी पाति पुत्रवत् त्वचा न बलतो मेघा सर्वे देवा मुनीश्वरा स्वाधिकारं च कुर्वन्ति चकिता भवतो भयात् त्वत्पादकमलस्यैव सेवनादुविमानवा नान्द्रियन्ति सुरानत्र लोकेश च भुञ्जते त्वत्पादकमलस्यैव सेवनादघ्मन्परां गतिं योगधनानामप्यगम्या सर्वदुर्लभां सनत्कुमारवाच बृहस्पतिरिति सत्तुत्वा शङ्करं लोकशङ्करं पादयोपादयामास तस्येषस्य पुरन्दरं पादयित्वा च देवेशमिन्द्रनत् शिरोधरं बृहस्पतिरुवाचेदं प्रश्यावन्नत् शिवं बृहस्पतिरुवाच दीनानाथ महादेव प्रणतं तव पादयो समुद्र च शान्तं त्वं क्रोधं न कुरु तुष्टो भव महादेव पहाहेन्द्र शरणागतम् अग्निरेष संयातु भालनेत्र समुद्रव सनत्कुमारवाच इत्याकर्ण्य गुरुवाक्यं देवदेवो महेश्वर उवाच करुणा सिन्धुर्मथनीं निर्हाद्या गिरा महेश्वर उवाच क्रोधं च निःसृतं नेत्रदार्यामि बृहस्पते कथं हि कुञ्जुकी सर्प सन्धते नोचितां पुनः सनत्कुमार उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य शङ्करस्य बृहस्पति उवाच क्लिष्टरूपक्ष भयव्याकुलमानसा बृहस्पतिरुवाच हे देव भगवन् भक्ता अनुकम्प्या सदैव हि भक्तवत्सलनामेति त्वं सत्यं कुरु शङ्कर क्षेपतु मन्यत्वेवेश्वतेजोत्युग्रमहसि उदर्त सर्वभक्तानां समुद्रपुरन्दरं सनत्कुमारवाच इत्युक्तो गरुणारुद्रो भक्तवत्सल नाम भाग प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा सुरेजयं प्रणतार्तिहा शिववाच प्रीतास्तुत्तयानया तात ददामि वरमुत्तमम् इन्द्रस्य जीवदानेन जीवेति त्वं प्रभाव्रज समुदूतो नलो योऽयं भालनेत्रात् सुरेशः इनं त्वयक्ष्यामयं दूरे यथेन्द्र नैव पीडयेत् सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा त्वं करे धृत्वा स्वतेजो नलमद्भुतं भालनेत्रात् समुद्भुतं प्राक्षिपल्वनाम्भसि ततः क्षान्तर्दधे रुद्रो महालीलाकरा प्रभु गुरुशक्रो भयान्मुक्तो जग्मतो सुखमुत्तमं तदर्थं गमनोद्युक्तो दर्शनं प्राप्य तस्य वै कृतार्थ गुरुशक्रो हि स्वस्थानं जगत्तुमुर्दा इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने शक्रजीवन नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्याय व्यासुवाच सनत्कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमोऽस्तु ते श्रेतुयों दूतामेघ्य
मेघकथा शम्भोर्महात्मना क्षिप्ते स्वतेजसि ब्रह्मान् बालनेत्रसमुद्भवे लवनामभसि किं ताता भक्तत्वदाशु तत्। सनत्कुमार उवाच शृणु तात महाप्राज्ञ शिवलीला महादुता यच्छ्रुत्वा श्रद्धया भक्तो योगिना गतिमाप्नुयात्। अथो शिवस्य तत्तेजो भालनेत्रसमुद्रवं क्षिप्तं च लवणाम्भोजो सद्यो बालत्वमापः। तत्र वै सिन्धुगङ्गाया सागरस्य च सङ्गमे भूरोदो च स वै बालः सर्वलोकभयङ्करा रुदतस्तस्य शब्देन प्राकम्पधरणीमुहुः। स्वर्गक्ष सत्यलोकक्ष तत्त्वस्वनादिरीकृता बालस्य रोदनेनैव सर्वे लोकाक्ष तत्रसु सर्वता लोकपालाक्ष विहवलीकृतमानसा किं बहुतेन विप्रेन्द्र चचार सच्चराचरम् भुवनं निखिलं तात रोदनात् क्षिशोर्विभो। अथ ते व्याकुला सर्वे देवा सम्मुन्यो धृतं पितामहं लोकगुरुं रामान् शरणं ययुः। तत्र गत्वा च देवा मुन्यक्ष सवासवा प्रणम्य च संस्तुत्य रोचुस्तं परमेष्ठिनं। देवाऊचु लोकाधीश सुराधीश भयं न समुपस्थितं तं नाश महायोगी जातोऽयं हादुतोरवा। सनत्कुमार उवाच इत्याकर्ण्य वचस्तेषां ब्रह्मालोकपितामहः गन्तुमेच्छत् ततस्तत्र किमेतदिति विस्मिता। ततो ब्रह्मासुरैस्तावत्र सत्यलोकता रसां तज्ज्ञातुमिच्छन् स समुद्रमग्नस्तदा यावत्तत्रागतो ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः तावत् समुद्रस्योत संज्ञितं बालं स ददर्शः। आगतं विधिमालोक्य देवरूप्यथ सागरा प्रणम्य शिरसा बालं तस्योत्सङ्गेनैर्यवेशयत्। ततो ब्रह्मा ब्रवीदाख्यं सागरं विस्मयान्विता जलराशे द्रुतं ब्रूहि कस्यायं शिशुर्दुता। सनत्कुमार उवाच ब्राह्मणो वाक्यमाकर्ण्य मुदिता सागरस्तथा प्रत्युवाच प्रजेशं स नत्वा स्तुत्वा कृताञ्जलिः। समुद्रोवाच भो भो ब्रह्मन्मया प्राप्तो बालकोऽयं जानता प्रभवं सिन्धुगङ्गायां कस्मात् सर्वलोकजातकर्मादीन् संस्कारन् कुरुष्व वास्य जगद्गुरु। जातकोक्तफलं सर्वं विधातवर्तुमर्हसि। सनत्कुमार उवाच एवं वदति पातोऽधो स बाला सगरात्मजा ब्राह्मणं गृहीत्कण्ठे विधुन्वन्तं मुहुर्मुहुः विधूनं च तस्यैवं सर्वलोककृतो विदे पीडितस्य च कालेन नेत्राभ्यां ब्रह्मञ्जलं ताराभ्यामभिजातस्य तत्तुसुप्तस्य महोजसा कथञ्चित् मुक्तकण्ठस्तु ब्रह्म प्रोवाच सादरम्। ब्रह्मवाच शृणु सागर वक्ष्यामि तवास्य तन्यस्य हि जातकोत्तफलं सर्वं समाधानरत् खलु नेत्राभ्यां विधृतं यस्माद् नैव जलं मम तस्मा जलन्धरेतिह ख्यातो नाम्ना भवद्वसो अधुनैवैष तरुणा सर्वशास्त्रपारगा महापराक्रमो धीरो योधाचरण दुर्मदा भविष्यति च गम्भीर सत्वं यथा सम्रेहुः सर्वचेता च संग्रामे सर्वसम्परिद्वराजिता दैत्यनामधिपो बाला सर्वेषां च भविष्यति विष्णुरपि भवे चेता न कुतश्चित्पराभवा अवध्य सर्वभूतानां विना रुद्रं भविष्यति। यत् एष समुद्रस्त
वेदानि गमिष्यति पतिव्रतास्य भविता पत्नी सौभाग्यवर्धिनी सर्वां सुन्दरी रम्या प्रियवाक् क्षीरसागरा सनत्कुमारोवाच इत्युक्त्वा शुक्रमाहूय राजेन्द्रं चाभ्ययशेचत आमन्त्र्य सरितां नाथं ब्रह्मान्तर्दार्णं मन्वगात् अथ तदृशनोत्फुल्लनयन् सागरस्तदा समात्मजं समादाय स्वगेहं गमन्मुदा अपोषत् यन्महोपाय स्वबालं मुदितात्मका सर्वान् सुन्दरं रम्यं महादुत्तसुतेजसम् अथामबुधि समाहूय कालनेमि महासुरं वृन्दाभिधासुतां तस्य तद्यार्थमयाचत कालनेमसुरो वीरो सुरो नानापरवरसुभिः साधुमेने धैर्याचा सर्वकर्मणि कुनो मुने जलंधराय वीराय सागरप्रभवाय च ददो ब्रह्मा विधानेन स्वसुतां प्राणवल्लभां तदोत्सवो महानासीद् विवाहे च तयोस्तदा सुखं प्रापुर्नदानद्यो सुराक्षयवाखिला मुने समुद्रोऽति सुखं प्राप सुतं दृष्ट्वा हि सस्त्रियं दानं ददो द्विजातिभ्योपयनये भयक्ष यथाविधि ये देवैर्निजिता पूर्वं दैत्या पातालसंस्थिता ते हि भूमण्डलं याता निर्भयास्तमुपाक्षिता ते काले प्रमुखास्ततो सुरास्तस्मै सुतां सिन्धुसुताय दत्त्वा बभूवुरत्यन् उदान्विता हि समाक्षिता देवनिर्जयाय स चापि वीरो बुद्धिपालको सो जलन्धरो राख्यो सुरवीरवीरा सम्प्राप्य भार्यं मतिसुन्दरी वशीचकार राज्यं हि कविप्रभावत्वात् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने जलन्धरोत्पत्तिविवाहवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः।